Friends, I am Ravindra Kumar Sahu, retired AGM of SBI. In this video, we'll be discussing on the type of questions which are asked in DRA examinations conducted by IIBF. বন্ধুগণ এই ভিডিওরে আমি IIBF by Indian Institute of Banking and Finance द्वारा कंडक्ट करा जाउथिबा DRA परीक्षा रे साधारणतः जो प्रकार प्रश्न आसे से विषय आम आलोचना करवा। मु आशा करुच्ची आपण माने आपनर सिलेबस रे जहाँ सबू पाठ्यक्रम दि जाइछि से सब डिस्कशन से सब पढ़िबे। आउ प्रश्न गुड़िक आपणकर जो मेमोरी को रिफ्रेश करने साहाय्य हो। सब मन रखु जे पाठ्यक्रम जो दि जाइए आपणकर अध्याय गुड़िक चैप्टर गुड़िक से गुड़ाक मन देकरी संपूर्ण रूपे पढ़िबे। ये प्रश्न उत्तर जहाँ मुझे डिस्कसन करी जहाँ आलोचना करी से गुड़ा खाली आपणकर मेमोरी को रिफ्रेश करने परीक्षा दृष्टि प्रिपेयर होगा साहाय्य हो। DRA पाठ्यक्रम 18टा चैप्टर अच्छी। 18टा चैप्टर रु आम गोटे गोटे चैप्टर गोटे गोटे एपिसोड रे डिस्कसन करवा। आज आम चैप्टर नंबर 1 डिस्कसन करवा। चैप्टर नंबर 1 हूँ जनरल बैंकिंग। I request all of you to discuss, to read completely the syllabus which is prescribed by IIBF. My endeavor is only to refresh your memories and to appraise you about the type of questions which are likely to be asked in the DRA examinations conducted by IIBF. I request you to go through the entire content of the chapters. Then only you can understand the details. In the first chapter, we will be discussing on banking, general banking. In general banking, a question may be asked, what is banking? A question may be asked, what is banking and where it is defined? Banking means accepting for the purpose of deposit a sum of amount from the public for investment or lending which is repayable by withdrawal check or which is withdrawable by withdrawal check, draft order, etc. And it is described under section 5B of Banking Regulation Act 1949. ओडिया रे बैंकिंग शब्द केउठारे वर्णना करा जाइछि आ यार अर्थ कोन? बैंकिंग शब्दर अर्थ सेक्शन 5B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रे वर्णना करा जाइछि। बैंकिंग रो अर्थ जनसाधारण कोठू टंका डिपोजिट रखिबा जोटा कि बैंक ऋण देवा पाई बा कोनोसी जगह रे निवेश करिया पाई व्यवहार करे एवं एही जमा राशि को जमाकर्ता को विथड्रॉल चेक ऑर्डर ये सब माध्यम रे फेरस्त हो पारे। आ गोटे प्रश्न आसी पारे, व्हाट इज शेड्यूल्ड बैंक कौन? शेड्यूल्ड बैंक काहाकू कहती? शेड्यूल्ड बैंक से बैंक गुड़िक जो मानकर ना भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 द्वितीय परिच्छेद रे लिपिबद्ध होइछि।
अन्य भाषा कहू गले जो बैंक मानकर ना भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 द्वितीय परिच्छेद में लिपिबद्ध होती से शेड्यूल्ड बैंक कह जाए. What is a scheduled bank? Scheduled bank are those banks which are listed under the second schedule of RBI Act 1934. Another question may come. Rather, we'll be discussing how many types of scheduled banks are there. First type is public sector bank. आमे वर्तमान आलोचना करिबा केते प्रकार बैंक अछंती, केते प्रकार शेड्यूल्ड बैंक अछंती. शेड्यूल्ड बैंक्स प्रथम प्रकार होची पब्लिक सेक्टर बैंक बा सरकारी क्षेत्र बैंक. सरकारी क्षेत्र बैंक क्या कह जाए ये भी गोटे प्रश्न आसपे. सरकारी क्षेत्र बैंक से कह जाए जो बैंक रे भारत सरकार पुंजी निवेश शतकड़ा 51% बा ताठारु अधिक. What is a scheduled bank? What is a public sector bank? What is a public sector bank? Public sector bank are those banks where government of India या central government's investment is 51% or more. Public sector banks are mainly of two types. One is SBI and another type is nationalized banks. Public sector bank बा सरकारी क्षेत्र बैंक दुई प्रकार. गोटे हूँ SBI भारतीय स्टेट बैंक जोटा आगे कह जाउथला एवं राष्ट्रायत्त बैंक. राष्ट्रायत्त बैंक माने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, IOB, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक एगुड़ा सब होचंती राष्ट्रायत्त बैंक. Then next type of banks are public sector banks. Sorry, private sector banks. Private sector banks are again classified into different types. Now we will be discussing one by one. One is old generation private sector banks. You should not expect any question. Mostly no question will be asked from old generation private sector banks. But new generation private sector banks questions may come. New generation, when did new generation private sector banks come into existence? It may be a question that when did new generation private sector banks come into existence? These new generation private sector banks, they came into existence after the financial reforms of in the year 1991-92. That means 92-93 onwards. नूतन पीढ़ीर घरोई बैंक केबे स्थापित हेले प्रश्न आसपे. तार उत्तर है 1991-92 मसीह आर्थिक सुधार नीति आम केंद्र सरकार आनी तापर एगुड़िक सब स्थापित हेले अर्थात 1992-93 मसीहा तापर. Another question may come, how did these new generation private sector banks render better customer service, or how could these new generation private sector banks render better customer service? These new generation private sector banks could render better customer service with the help of strong capital base and adoption of new technology. नूतन पीढ़ीर घरोई बैंक माने किपरि उन्नत ग्राहक सेवा जोगाइले जोगाइबार सक्षम हेले. तार उत्तर है सुदृढ़ पुंजी एवं उन्नत ज्ञान कौशल द्वारा नूतन पीढ़ीर घरोई बैंक माने उन्नत ग्राहक सेवा जोगाइबार सक्षम हेले. आ गोटे टाइप प्राइवेट सेक्टर बैंक है
पेमेंट बैंक्स पेमेंट बैंक रो विशेषत्व कौन प्रश्न आसपा पेमेंट बैंक रो विशेषत्व हला से माने पेमेंट बैंक माने ग्राहक पिछा अति बेसी रे 2 लाख टंका केवल दाबी जमा ही आहरण करि परिबे बा रिसीव करि परिबे ग्रहण करि परिबे से माने ऋण देई पारंती नाही से मानकर जो जमा राशि ग्राहक मान जो जमा राशि नियंती ताकू से माने सरकारी बॉन्ड बा बैंक फिक्स डिपॉजिट रे जमा रखती What are the special features of a payment bank? Payment banks are those banks which can receive only demand deposits up to rupees 2 lakhs per customer. They cannot lend, and the deposited amounts they invest or they deposit only in government bonds and bank fixed deposits. Another type of private sector bank is small finance bank. Question may come, what are the special features of a small finance bank? There are 3 features. First is, they are smaller versions of commercial banks. Second, they have to lend minimum 75% of their loan portfolio to priority sectors. Third, minimum 50% of their loans should be given to loans up to rupees 25 lakhs. क्षुद्र व्यवसाय ऋण बा स्मॉल फाइनेंस बैंक विशेषत्व कौन क्षुद्र व्यवसायिक बैंक बा स्मॉल फाइनेंस बैंक विशेषत्व है से माने व्यावसायिक बैंक छोट स्वरूप अंततः शतकड़ा 75 भाग ऋण से माने अग्राधिकार क्षेत्र को देवाक हुए अंततः 50% शतकड़ा 50 भाग ऋण पोर्टफोलियो से माने छोट व्यवसायी बा छोट ऋण को दियंती जोटा कि 25 लाख टंका कम आ गोटे प्रकार बैंक है आरआरबी आरआरबी कौन रीजनल रूरल बैंक बा आंचलिक ग्राम्य बैंक आंचलिक ग्राम्य बैंक विषय मुख्यतः 2टी प्रकार प्रश्न आसे जे आंचलिक ग्राम्य बैंक रे पुंजी निवेश के हिसाब रे होई थाए आंचलिक ग्राम्य बैंक रे भारत सरकार 50% शतकड़ा 50 भाग राज्य सरकार शतकड़ा 15 भाग एवं प्रायोजक बैंक शतकड़ा 35 भाग पुंजी निवेश होता है आंचलिक ग्राम्य बैंक माने क्यों स्थान रे तांकर शाखा खोली पारिबे आंचलिक ग्राम्य बैंक माने सरकार द्वारा निर्धारित जिला मानकरे तांकर शाखा खोली पारिबे as regards regional rural bank or RRB 2 types of questions may come what is how the capital is financed or what is the capital structure of RRB the answer is central government invests 50% state government invests 15% 15% and sponsoring bank invests 35%. Where they can open branches? They can open branches in the government notified districts. Another
What are the another question may come? What are the traditional functions of banks? The answer is they accept deposits, they lend or they extend credit facilities, they facilitate remittances, and apart from these, they do so many other ancillary functions such as collection of checks, collection of bills, giving um, lockers on rent. But first three are the main functions: accepting deposits, lending, uh, extending credit facilities, and facilitating remittance of funds. The other funds, activities are ancillary activities or secondary activities, you can say, like giving lockers on rent, selling mutual fund and insurance products. These are all secondary functions. Another question, uh, हाँ, बैंक मानकर मुख्य काम कौन प्रश्न आसपे मुख्य काम है जनसाधारण को जमा ग्रहण करने ऋण देवा एवं टंका अंतरण करने अंतरण बा रेमिटेंस गोटे शाखार आ गोटे शाखा टंका पठे. Another question may come: who decides the rate of interest in different banking products? The answer is individual banks, they themselves or their board of directors, they decide on the rate of interest. बैंक मानकर शुद्ध हार किए निर्णय करे? बैंक मानकर शुद्ध हार से ही बैंक बा से मानकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से माने निर्धारित करते. एक कथा यही जो शुद्ध हार पूर्व दिन रे पूर्व काल रे किछि वर्ष पूर्वे भारतीय रिजर्व बैंक निजे सब ठीक निर्धारण करते. Another question may come: what is universal banking? The answer is providing all banking products and services under one roof is universal banking. Or in other words, providing both fee-based and fund-based service under one roof is called universal banking. सर्वसेवा व्यापी बैंकिंग कौन? गोटे छात तले सबु प्रकार बैंकिंग सेवा और उत्पाद जोगाइबा होची सर्वसेवा व्यापी बैंकिंग. अन्य भाषा रे शुल्क भित्तिक एवं वित्त भित्तिक सेवा प्रदान करिबा को यूनिवर्सल बैंकिंग बा सर्वसेवा व्यापी बैंकिंग कहा जाए. Another question may come: what is financial inclusion? Financial inclusion is providing basic banking services to the deprived class of people. वित्तीय अंतर्भुक्ति कौन? फाइनेंशियल इनक्लूजन रो ओडिया होची वित्तीय अंतर्भुक्ति. वित्तीय अंतर्भुक्ति कौन? जो माने समाज रे अनग्रसर लोक बा जो माने बेसिक बैंकिंग सेवारू वंचित होइचंती सेमानकु बेसिक अंतत
माने अन्यून बैंकिंग सेवा जोगाइबा होची वित्तीय अंतर्भुक्ति. What are the different products of financial inclusion? PMJDY और प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJJY और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, PMSBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आर दी 3 मेन प्रोडक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. वित्तीय अंतर्भुक्तिर कौन कौन उत्पाद? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनोटी होची वित्तीय अंतर्भुक्तिर उत्पाद. आ गोटे प्रश्न आसी पारे. Another question may also come. Which technological product is widely used by banks customers? ATM is the technological product which is widely used by banks customers. क्यों टेक्नोलोजी प्रोडक्ट बा ज्ञान कौशल प्रोडक्ट उत्पाद बैंक रो ग्राहक मानक द्वारा बहुल व्यवहृत? एटीएम होची गोटे टेक्नोलोजी प्रोडक्ट जोटा कि बैंक रो ग्राहक मानक द्वारा बहुल भाव व्यवहृत. आ गोटे प्रश्न आसी पारे. एटीएम, सीडीएम, नेट बैंकिंग यही सब सुविधा कहा द्वारा संभव? उत्तर है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन द्वारा संभव. ये सब सुविधा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन द्वारा संभव. एटीएम, सीडीएम, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, all these products are possible due to what? The answer is all these services are possible due to core banking solution. CORE, core, BANKING, banking, SOLUTION solution. So all these are all about chapter number 1. We will be discussing about the next chapter in the next episode. ये समस्त जहाँ मुझे आलोचना कली ये सब अध्याय प्रथम अध्याय विषय प्रश्न, द्वितीय अध्याय विषय आम द्वितीय एपिसोड रे आलोचना करिया. धन्यवाद.